क्लियर है। तो हमारे पास जो ओके सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इसको हम दबाएंगे, तो हमारे पास रिंग होगा, तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, mr² होगा। ठीक है। हम सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर को जब हम दबाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्क बनेगा। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। सो इन दिस केस आई विल यूज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, दैट इज mr²/2। सो आई विल राइट हियर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज mr²/2। क्लियर, बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास क्या सेल है, मींस मतलब क्या, होलो 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 स्फीयर है ना, होलो स्फीयर। हमारे पास क्या है, होलो स्फीयर है। तो अगर हमारे पास होलो स्फीयर, इसका सारा का सारा मास कहाँ पर होगा बताओ, यहाँ पर होगा कि नहीं, यहाँ पर होगा, यहीं कहीं होगा, है ना। इसका सारा का सारा मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका सारा का मास यहाँ होगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। अब अगर सॉलिड सिलेंडर है, इफ द सिलेंडर इज सॉलिड, इसका सारा का सारा मास हर जगह फैला होगा, है कि नहीं, इसका सारा का सारा मास हर जगह फैला होगा। इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वॉल्यूम, so here what I'll do, here I will use rho. So rho is what, mass divided by volume. I will use volume. What I will use here is the mass distributed over whole volume. No, mass distributed over the area. So here again I will use, for the derivation purpose, sigma equals to m/a. Clear? So what is the moment of inertia of this? So moment of inertia of, okay, I am writing here, okay, otherwise you will get confused. Solid sphere. So moment of inertia of solid sphere will be what? Okay, 2/5 of mr². ना अभी तक मैंने जो तुम्हें ट्रिक्स बताया हूँ, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मैंने जो बताया, तो अगर उस तरीके से तुम सोचोगे, तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा मैंने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है मोर ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस, ओके, अबाउट द सेम एक्सिस, सपोज करो मैं इसके इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है ना, होलो की सॉलिड की, बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये कैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये क्या है, 0.3 mr²। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, 0.4 mr²। तो देखो 0.6 है, तो ये ज्यादा हुआ ना, ये वाला ज्यादा हुआ। अब मैंने ट्रिक बताया उसको, देखो इसमें सारा का सारा मास ज्यादा दूर है, इसमें सारा का सारा मास, ऑल मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर इज 2 away, okay, from the center compared to here. Here if you compare, so most of the masses are near to the center, okay, most of the masses are distributed near to the center, so that's why the r will be minimum here. But here for all masses, all the okay particles, r will be maximum, that will be equal to the radius of this sphere। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा मास तो इसका होना चाहिए, देखो आ रहा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से सोचोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लो जाओगे, है ना, अब तक जितने क्वेश्चन आए सब कर लोगे। ठीक है, बताओ, क्लियर है? Anyone having any doubt up to here, ask them. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम बात करते हैं, हमारे पास दो थ्योरम आता है, टू थ्योरम। एक हमारे पास होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। तो अगर इफ यू नो द okay moment of inertia about x axis, you know the moment of inertia about y axis, you can say what will be the moment of inertia about z axis। z axis जब भी मैं लिखता हूँ तो ये होता है ना, ठीक है, पता है ना, ये z axis होता है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, सो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। It doesn't mean that I will use this formula for using only the moment of inertia about z axis if I know ix and y, not like that. Even if you know iz, iy, you can calculate ix. If you know iz, ix, you can calculate iy. Okay, so it depends on the situations, questions. Okay, so usually we use like that also. So what I will write here, so if I say ix equals to what iz minus iy, ठीक है, सही लिखा हूँ, ठीक है, and iy is what i of z minus of what I of x। क्लियर है? नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
I already did so many questions on this concept. Again, I will repeat it. So, okay, parallel axis theorem. Parallel axis theorem क्या कहता है कि if you know the moment inertia about any one axis, suppose if I know the moment inertia about this axis, okay. So if I know the moment inertia z axis, okay. If you know the total mass, total distributed mass, okay, wherever is distributed, okay, but total mass, at least we should know total mass. So that total mass is capital of M. And all the, okay, now I want to calculate moment inertia about the axis which is at the distance of d. Suppose now we know the moment inertia about this axis. I want to calculate moment inertia about this axis. So basically, what's happening? See, this is ring. So this moment inertia I know about here. Okay, clear. Now I want to calculate moment inertia this of this. Very good concept. So now I want to calculate moment inertia this. So what is right now? What is okay moment inertia of this ring? Can anyone tell what is moment inertia of this ring? Okay, so I will write the formula here. I already taught you, so I already derived the formula. So I am using the formula over here. I am telling the answer. So answer will be what? Mr square about the center plus of md square, r distance, mr square plus mr square. So moment of inertia of this ring in this condition will be 2mr square. If this question come, you can do it. Okay, and this question might be asked. Okay, so you have to know the concept what I am telling, what I am dealing with. Clear? In place of this I can take, yeah, in place of this I can take anything. In place of this I can take ring. In place of the, anything you take anything. No, drive the relation, apply the fundamental side. Fundamental side clear you, yes or no? Hey, tell me. So यहाँ पर कुछ भी आएगा तो अपन कर लेंगे. ऐसे सोच रहे हो? बताओ, 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 बताओ. ठीक है? So what's the parallel axis theorem? So moment of inertia about the parallel axis is what? I know already moment of inertia about any axis. I naught plus of m d square. D is what? This distance from the axis. Perpendicular distance from the axis, between the axis perpendicular. You already know. Okay. Clear? So basically again, if I know the moment of this, so from if I know this and this, I can get I naught. Okay, from here again. Clear? So what I say, I can also say again I naught will be what? I parallel minus of md square. Anything. You can ask anything. Nah, I can ask anything. Nah, to make you stop. Okay. So what's your focus? You have to find out the, okay, my intention, how I am thinking, and you have to think like that, and you have to reach to the answer as I reached, because I frame the question, so I know the answer already now. Clear? Can I erase everything? Next is what? Angular momentum. Okay, angular momentum. Okay, angular momentum. Okay, we already know linear momentum now. So basically, first write angular momentum. Angular momentum L will be what? R cross P. Cross product. Remember, cross product. Angular momentum, we already know angular momentum is vector, okay, direction. Clear? So can I say this as RP cos theta? Yes, why not? Yes, you can say. So sir. When angular momentum, can I say angular momentum can be 0? Yes, it's question. This question can be made now. This question, okay, might be asked. Okay, so you should know what, how I am thinking. Clear? So angular momentum can be 0? Yes. Okay, in which case angular momentum will be 0? Sir, theta is 90. Theta is 90 between what? R and P. Angle is between R and P. What is R and P? What is R and P? R and B, you don't know. Okay, so this, in that case, theta is 0. So if theta is 0, so angular momentum is 0. Clear? I'm not writing here. This is a hidden secret. Okay, I told you. Okay, so write all this in your brain, the notes. Clear? So I'm not writing this. Clear? So this same question comes from here, so you can do it. Okay, already drive this relation. I can create again different formula, but I have to cover the whole chapter right now. So I'm going for next concept. Clear?
Okay, so next is what I did this. Okay, next is torque. Torque is what? Torque is what? R cross F. R cross F. Basically, what I write, if you see my notes, if you check my notes, okay, so what I say, this is what R F perpendicular, or even I say R perpendicular F. Okay, this is the thing I use for doing questions. बट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको बेसिकली ये क्या फिर से R क्रॉस F, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हे लिसन, आई डिड मिस्टेक, हियर sin थीटा, ओके, rp sin theta na, this is what rp sin theta, r cross p na, rp sin theta na, okay. So yeah, that's why I didn't write, okay, but you know now, okay, now understood. So rp sin theta, so when it will be 0, when theta is 0, when r and p, okay, so r angle between r and p is 0, when it will be 0, L will be 0 when angle between r and p is 0, angle, what angle between this, angle between this is 0, clear. When r and p angle is 90, at that time angular momentum will be maximum, at that time angular momentum will be maximum, so I am not writing it again, come here, yeah. So this is what rf sin theta, clear, rf sin theta, clear. This is what basically torque equals to rf sin theta, you know already the meanings, we did so many questions on based on this, so I am moving onwards right now, clear, 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 clear. What is work? What is work? Work. If I ask you work is what? F dr, F dot dr, F dot dr. Yes or no? What was this? So right now, if I will ask you work energy here, so what will come? In place of F, I will use tau d theta, tau dot d theta. Okay. So this is basically what? Because I am using d theta, so d of work. So integration of d of work is equal to tau of d theta. So this is what? Energy. So if you put a minus sign, this is energy. Very, very important. Okay. So U equals to minus of integration of tau d theta. L. Clear? Clear? Up to here, anyone having any problem? Tell me. Ask me. Clear? So you know now angular momentum. Angular momentum R cross P, torque R cross F. Clear? Angular momentum. Okay. Clear? 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 You know, okay, this torque, any question comes from torque, you can do it, clear. You know energy, you want to put energy and work, okay. Work I will use tau d theta, so if type negative of work, that is energy, always, anywhere negative work is energy, clear, anywhere negative work, what I work do, okay, in the opposite sense, that work is stored there, or if I am getting work, so that energy, loss of energy, if I am getting work from somewhere, so how I am getting energy, work. अगर अपन का काम हो रहा है तो काम कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा होगा ना एनर्जी का, अगर हमने खर्चा नहीं किया तो एनर्जी किसका खर्चा होगा, सिस्टम का खर्च होगा, तो वो एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव में आकर के वर्क बन जाता है, ठीक है. बताओ मोमेंट डिफरेंस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एनी क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर, कम. वन मोर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. So basically, if I will conclude everything, so basically two types of motion right now, as of now, okay. What is rotation and another is translation, okay. So if I ask for translation kinetic energy, so what is that? Half mv square. Translational kinetic energy half mv square. What's the rotational kinetic energy? Rotational kinetic energy, that is in place of m, it will come I b omega, I omega square. Or if you know already, B equals to omega R, omega equals to V by R. So whenever needed, I can replace all these things. Because ये हमें replace करना पड़ता है क्वेश्चन में कभी-कभी, तो ये हमें पता होना चाहिए. यहाँ पे हम पक्की क्लियर रहना चाहिए सब कुछ, ठीक है. So this is rotation. If I will ask you only rotational kinetic energy, तो क्या होगा तुम्हारे पास half I omega square. If I ask you only translational kinetic, so what will be kinetic energy? Half mv square, ठीक है. If I ask you total kinetic energy of the system, total kinetic, the motion is okay, translation and rotation both. Clear? So what's the total kinetic energy? Total kinetic energy, can you tell me now? Okay, that is half of I omega square plus of half of m v square. ठीक है?
क्लियर क्लियर बताओ, किसी को किसी 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 को कोई दिक्कत है बताओ, किसी को कोई दिक्कत है बताओ। क्लियर। सो बेसिकली एल एल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, है ना। सो एल एल हमारे पास क्या है, आर क्रॉस पी। सो अभी मैं आर पे लिख दूं, एल क्या है हमारे पास, आर पी है। ठीक है ठीक है। अब देखो नॉर्मल मोमेंटम की बात करते थे, एम बी की बात करते थे। सर यहाँ पर आप आर पी लिख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है रुको, मैं क्या करता ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, सर आप कुछ और लिखो ना, एल इक्वल टू एम, एम की जगह पे क्या लिख दो, आई लिख दो, और बी की जगह पे क्या लिख दो, ओमेगा लिख दो। अरे सर मजा आ गया। सो एंगुलर मोमेंटम क्या, एल इक्वल टू आई ओमेगा भी होता है, आरपी भी होता है। हाँ 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 क्लियर। सो आई एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, क्लियर 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 क्लियर। अगेन ओके, बी इक्वल्स टू ओमेगा, ऑलवेज बी इक्वल्स टू ओमेगा, ऑलवेज बी इक्वल्स टू ओमेगा, ऑलवेज बी इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है बताओ, क्लियर 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 क्लियर। इम्पल्स, इम्पल्स मैंने बताया था आपको, इम्पल्स क्या था हमारे पास, एफ डी टी था, एफ डी टी था। ठीक है इसको ओके, सो ये डी टी है तो डी आई कर लो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा का पूरा तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी था, इसी को तुम लिख सकते थे एफ ऑफ डेल्टा टी। बोलो बोलो बोलो। अगर मैं एंगुलर इंपल्स की बात करूं, अगर मैं एंगुलर इंपल्स की बात करूं, एंगुलर इंपल्स की बात करूं, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ dt होगा कि ना, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ टॉ dt, है ना। यही हमारे पास का टॉ इंटू डेल्टा टी। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ। मैंने क्या बोला था कि जो इम्पल्स था, यहाँ पर जो इम्पल्स था वो क्या था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का डेल्टा पी के बराबर था, है कि नहीं है। ओके इम्पल्स इज change in moment, impulse is what is change in moment, impulse is what is change in momentum. On the same case angular moment impulse, angular impulse is what is change in angular momentum, what is change in angular momentum, what is change in momentum. So angular impulse is what is change in angular momentum, clear. So can I write here delta l. Anyone having any doubt up to your ask me. Clear, clear, clear. Tell me, tell me. Anyone having any doubt up to your ask me. Okay, एक one more concept here. F equals to, if I say F equals to, that is mass into acceleration. What is torque? What is torque? Okay, torque equals to in place of mass I, acceleration alpha, I into alpha. Tau equals to I into alpha. Tau equals to I into alpha. Clear? Clear? So okay, here what is sir alpha? What is alpha? Okay, so what I will use here, A equals to alpha into R, L equals to alpha into R, A equals to alpha into R. Clear? Clear, 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 clear. Tell me. So from here again, okay, can I say alpha equals to what? A by R. Alpha equals to A by R. Can I say alpha equals to A by R? Can I say? Tell me. Clear. ठीक है
So torque equals to we know I into alpha, so A equals to alpha into R. Okay, so from alpha equals to A by R, you can use and you can use this. Okay, now listen. If torque is zero, if net torque is zero, if net torque is zero, if net torque is zero, so can I say it's the net equilibrium? It's the net equilibrium. It's the net equilibrium. It's the net equilibrium. Yes, so it's the net equilibrium. So what is net equilibrium? I already explained you. Clear? Clear? Okay. What I asked you? Okay, there is pendulum. Pendulum is connected with mass. So what is the time period of this? It's totally clear in your brain. Totally clear in your brain. 2 pi L by G. But what if I control the mass by spring? Yeah. So what if I control the mass by spring? So in that situation, what is time? What is time period? So T equals to 2 pi m by k. T equals to 2 pi m by k. Time period equals to 2 pi m by k. Okay, clear? K is spring constant. Okay, K is here spring constant given in the question. Given in the constant question. Clear? So next I will start SHM. So from in SHM, this is very important, most important formula of SHM. This is most important concept. Clear? So again I want to discuss about this some things. Okay, if I say T equals to 2 pi a spring pendulum, this is a spring